Hello everyone, welcome back to the channel. So let's start with Dinasa's video for 14th of September. So जैसे कि कल हमने देखा था कि निपा वायरस केसेस डिटेक्ट हुए हैं केरला के अंदर and the cases the number rises to 5. 789 contacts been kept under watch. तो basically यहाँ पे अगर हम broader topic के बारे में सोचे कि इंडिया का पैंडेमिक प्रिपेयर्डनेस लेवल कितना है, कोई भी पैंडेमिक की आप बात करो, निपा केसेस की आप बात करो, निपा वायरस अगेन ये एक जूनोटिक डिजीज है जो एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट होता है एंड अगेन ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन भी कंफर्म किया जा चुका है। सो ये एक एरिया है जिसके बारे में आप सोच सकते हो व्हेन वी टॉक अबाउट द ब्रॉडर लेवल। So parliamentary special session, it is going to discuss parliament की 75-year journey क्या रही and it is going to take up certain bills. And apart from this स्पेशल सेशन के अराउंड हम इन डिटेल क्रिटिकली ऑलरेडी चीजें देख चुके हैं जब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या स्पेशल सेशन को मेंशन करता है अगर कोई आर्टिकल है तो वो क्या बोलते हैं स्पेशल सेशन के बारे में एंड कौन सी ऐसी सिचुएशंस है जब स्पेशल सेशंस किए जा सकते हैं। देन मणिपुर की अगर हम बात करें तो वुमेन ग्रुप सेस मीटी वुमेन ग्रुप जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है मणिपुर में, जैसे कि हम जो बफर जोन्स हैं मणिपुर में जो क्रिएट किए गए हैं अगेन फॉर सेफ्टी पर्पसेस उनको वो रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो कर्फ्यू सिचुएशन है बट पीपल दे डू नॉट एक्सेप्ट इट एंड वी कैन से कि अगेन situation still remains volatile. Still we are seeing key people they are dying of violence and the attacks that are being done in the state of Manipur. तो कैसे हम अगेन पीस क्रिएट कर सकते हैं, यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो ट्राइबल कम्युनिटी है जो हिली रीजन्स में रहती है वर्सेस द मेजॉरिटी कम्युनिटी दैट इज द मीटी कम्युनिटी। तो ये सारा जो हम बोल सकते हैं कि एथनिक वायलेंस जो स्टार्ट हुई मणिपुर में इट वाज बिकॉज हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि जो मेजॉरिटी कम्युनिटी है मीटी कम्युनिटी उनको एसटी स्टेटस दिया जाएगा। देन अगेन टू स्टडी द निपा वायरस एक्सपर्ट्स का मानना यह है कि इकोलॉजिकल डायनामिक स्टडी करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो 2019 में जब निपा इट सरफेस्ड इन द स्टेट, ये पहला ऐसा टाइम था जब निपा वायरस अगेन वी इट वाज द फर्स्ट एनकाउंटर टू निपा वायरस। इट सरफेस्ड इन स्टेट ऑफ केरला फॉर सेकंड कॉन्जिक्यूटिव ईयर। एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दे दी थी कि गिवन द ओमनी प्रेजेंस ऑफ दिस टेरोपस मेडियस स्पीशीज ऑफ बैट्स जो है, क्योंकि निपा वायरस बैट से स्प्रेड हो रहा है, बैट्स से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो रहा है। सो दिस इज अ स्पीशीज ऑफ बैट्स जिसमें अगेन ओमनी प्रेजेंस ये बैट्स वी कैन सी ऑलमोस्ट हर जगह स्टेट में मिलते थे। तो दे वर फाउंड टू बी द की रिजर्वॉयर्स ऑफ द निपा वायरस अक्रॉस द स्टेट। सो केरला शुड प्रोबेबली एक्सपेक्ट कि जो एनुअल आउटब्रेक्स है निपा वायरस के वो एनुअली हो सकते हैं। तो अगेन जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात करी प्रिपेयर्डनेस लेवल क्या है हमारा टू डील विद सच काइंड ऑफ आउटब्रेक्स। एंड अगेन म्यूटेशन की भी आप बात करो तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द पॉसिबिलिटीज। सो वो एक दूसरा चैलेंज है। एंड अगेन कोविड-19 के केस में भी हमने देखा जो म्यूटेशंस हो रही हैं वो आज के टाइम में भी हमारे लिए एक चैलेंज है। सो इस चीज को भी हम कैसे डील करने वाले, कैसे टैकल करने वाले हैं, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एज वेल। और जो करंट आउटब्रेक हम देखने को मिल रहा है केरला में इट इज द फोर्थ आउटब्रेक। सो इसके बाद अगर आप बात करें जो पहला हमारा एनकाउंटर हुआ देन सेकेंड टाइम, तो कुछ लेसन्स रहे होंगे, हाउ वी आर वर्किंग अपॉन देम, हम उनको कैसे यूटिलाइज कर रहे हैं। एंड अगर फोर्थ आउटब्रेक तक सिचुएशन आ गई है तो एटलीस्ट कुछ जो हमारी लर्निंग्स है उन्होंने हमें डेफिनेटली हेल्प किया होगा या कर रही होंगी टू डील विद दिस आउटब्रेक एज वेल।
एजुकेशन सेक्टर की अगर हम बात करें, सो मॉकरी ऑफ द pedagogic ethics and the breaking of a bond. So imagine a teacher who was the classmates of a 7-year-old student to slap him one by one. Those who do so softly, they are asked to hit the boy harder. Again, एक यूपी में केस हुआ था where a private school teacher, she asked a student to hit another student. That was again because of the different religions. सो गैप्स इन टीचर ट्रेनिंग की अगर हम बात करें, ब्रॉडर लेवल पे बात करने वाले हैं एजुकेशन सेक्टर की, स्पेसिफिकली प्राइमरी लेवल पे, तो न्यू स्कूल्स वी आर सीइंग रेगुलरली दे रिमाइंड्स कि मोमेंटम जनरेटेड बाय द राइट टू एजुकेशन एक्ट दैट वाज एनैक्टेड ओवर अ डेकेड अगो, इट हैज सबसाइडेड. सो बेसिकली न्यू स्कूल्स क्रिएशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की हम यहाँ बात कर रहे हैं, तो वहां पे भी अगेन मोमेंटम स्लो डाउन हो रहा है, बट मेन जो प्रॉब्लम है, आप स्कूल्स क्रिएट कर दोगे. स्कूल्स क्रिएट करने का मतलब ये नहीं कि हमारा एजुकेशन सेक्टर इम्प्रूव हो रहा है, क्योंकि वो एक एस्पेक्ट होगा. वो जिस क्वांटिटी की हम बात कर रहे हैं, ज्यादा इफेक्टिव अगर हम किसी फैक्टर की बात करें जो हमें हेल्प करेगा, फर्स्टली आप कैसे इंश्योर करोगे कि बच्चे स्कूल में जाएं एंड जो अगेन उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही हो, वो अगेन जो क्वालिटी होनी चाहिए, वो क्वालिटी एजुकेशन उनको मिल रही है. तो वहां पे टीचर ट्रेनिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आ जाता है. So by assigning a day for the teachers and another one for the children, India seems to have forgotten that the two form a bond. So teacher-student bond exist करता है, वो भी again एक important role है. No worthwhile education can take place when this bond breaks. So again जब हम बात कर रहे थे कि कैसे हम ensure करेंगे कि बच्चे स्कूल में जाए, they get themselves enrolled, तो वहां पे teacher-student bond important role play करता है. Then, when we talk about the Chattopadhyay's efforts, so one of the many reports written since India's independence, they try to spell out कि what might constitute appropriate professional conduct. Mind the phrase appropriate professional conduct by the adults who serve as teachers. So this report is known as the Teacher Commission report, and it was chaired by D.P. Chattopadhyay. He was a philosopher, and his commission included some of the best minds available to reflect on teaching. तो जो रिपोर्ट थी, टीचर कमीशन रिपोर्ट जो रिलीज की गई, इट शोड कि कैसे how far school teaching in India, it was from standards and ethics that one might regard as professional. So many decades they have passed since that report was submitted. Hardly anyone reads it now. So summary of recommendations is also available on the internet, also for the benefits of student. Again, हमारे लिए ये रिपोर्ट की जो रिकमेंडेशन थी वो इम्पोर्टेंट हो जाती है, so you can just go through it once. And the report, it also advocated कि well read, thoughtful teacher who is conscious of her decisions and actions. So you can mind these words जो use किए जा रहे हैं. रिपोर्ट का जो सजेशन था, रिकमेंडेशन था, it said कि well read, thoughtful teacher who is conscious of her decisions and actions. ऐसे टीचर्स हमें स्कूल्स में चाहिए. So deadliest and strongest earthquakes in recorded history अगर हम देखें, so भुज earthquake हुआ था, it was the deadliest in India. 1941 में earthquake हुआ अंडमान में, 1897 में असम में. So recently we saw कि मोरक्को में one of the strongest earthquake देखने को मिला, जिसकी वजह से almost 2000 people have lost their lives. And यहाँ पे again different countries में, Haiti में there was in 2010 where 3 lakh people died. Then China में 1976 में, again China में another location, Japan 1923, Turkmenistan in 1948. So these are some of the deadliest earthquakes India में जो हुए, and again globally different countries में. So even disaster management की जब हम बात करते हैं earthquake के केस में, so since India lies specifically northern India, हाई सिस्मिक जोन में लाई करता है, तो वहां पे भी अगेन हमारे क्या प्रिपेयर्डनेस लेवल है, डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान क्या है, डिफरेंट स्टेक होल्डर्स कौन से इन्वॉल्व है, उनका क्या क्या रोल, क्या क्या फंक्शंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. So analyzing the global stock take report. So when we talk about this report, क्या again report की findings है, status of the pledges and promises taken by the countries, Paris Agreement 2015 में
वो क्या स्टेटस है। 17 की फाइंडिंग्स जिसकी रिपोर्ट बात करती है, लेट्स सी व्हाट इज दैट, एंड डिड द दिल्ली डिक्लेरेशन एक्नॉलेज द फाइंडिंग्स ऑफ दिस रिपोर्ट और नॉट। सो व्हाई दिस रिपोर्ट इज कॉल्ड द ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट। बेसिकली यहाँ पे हम परफॉर्मेंस ही देख रहे हैं, डिफरेंट कंट्रीज ने जो टारगेट सेट किए वो वहां पे अगेन क्या स्टेटस है उन टारगेट लेवल का। सो सिंथेसिस रिपोर्ट इट ties into another larger exercise जिसको बोलते हैं ग्लोबल स्टॉक टेक दैट इज एक्सपेक्टेड टू टेक प्लेस once in 5 years. So 2015 में जब countries they committed in the Paris कि they will be keeping the global temperatures from rising beyond 2 degrees Celsius by the end of this century and as far as possible below 1.5 degrees Celsius. So they also agreed कि periodically obviously इन चीजों को जो steps ले जाएंगे उनको review करना भी important है, और we can say कि it is important to take stock of the efforts made by individual countries in containing these greenhouse gases and transitioning their fossil fuel dependent energy systems to the renewable sources. So that is why the name of the report is Global Stocktake Report. So report का क्या कहना है, इट सेज 17 की फाइंडिंग्स है, तो ओवरऑल वो सजेस्ट कर रही है कि वर्ल्ड इज नॉट ऑन ट्रैक टू अचीव द पेरिस अग्रीमेंट टारगेट्स, दो देयर वाज स्टिल रैपिडली नैरोइंग विंडो फॉर कंट्रीज टू गेट देयर एक्ट टुगेदर। सो इन अ वे वी आर मोर क्लोजर टू अ सिचुएशन जहां पे चीजें एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद इरिवर्सिबल हो जाएंगी। सो राइट नाउ कंट्रीज दे आर नॉट ऑन ट्रैक, तो एक ये वन ऑफ द मेजर फाइंडिंग्स हैं। एंड उसके अलावा जो अगेन विंडो ऑल्सो अवेलेबल, टाइम विंडो अवेलेबल है डिफरेंट कंट्रीज के पास टू इवन यू नो मिटिगेट द एफर्ट्स या प्रिवेंट द टेम्परेचर फ्रॉम राइजिंग इवन 2 डिग्री सेल्सियस की आप बात करेंगे तो वो विंडो भी कम होती जा रही है। सो एज आई सेड कि वी आर मूविंग मोर क्लोजर टूवर्ड्स a situation or a time where things would be irreversible as far as the climate change impact is concerned. So उसके बाद again हम कैसे situation को deal करेंगे, कैसे हम again mitigate करेंगे जो क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। ऑफ लेट वी आर आल्सो सीइंग डिफरेंट कंट्रीज में ग्लोबली फ्लैश फ्लड्स की बात करें, क्लाउड बर्स्ट की बात करें, आप अर्थक्वेक्स की बात करें, ग्लेशियर लेक बर्स्ट फिनोमेनास की आप बात करें, ड्रॉट्स की बात करो, तो ये सारे अगेन क्लाइमेट चेंज की वजह से हमें इम्पैक्ट्स देखने को मिल रहे हैं। हीट वेव्स की बात करो, फॉरेस्ट फायर्स की बात कर सकते हैं। सो अगेन इनको हम कैसे अडेप्ट करेंगे ऐसी सिचुएशन से। सो यूनाइटेड नेशंस एमिशंस गैप रिपोर्ट का भी ये कहना है कि 23 बिलियन टन्स ऑफ CO2 वर रिक्वायर्ड टू बी कट टू कीप द एमिशंस इन लाइन विद द पेरिस एग्रीमेंट, वेयरएज जो हमारी करंट प्लेजेस हैं बाय डिफरेंट कंट्रीज, इवन इफ अगर हम उनको फुल्ली इंप्लीमेंट कर देते हैं, दे वुड ओनली कट अराउंड 2 to 3 बिलियन टन्स ऑफ CO2 emissions, 2 to 3 बिलियन टन्स ओनली, एंड कितनी रिक्वायर्ड है, 23 बिलियन टन्स ऑफ CO2 emissions. And given this, जो again हमारी current pledges है, we are not even on track to completely accomplish them as well. तो we are lacking. Again, ये बहुत important area हो जाता है, इसकी intensity, gravity of the situation को समझना बहुत important है। सो लद्दाख में अगर हम बात करें प्लो सिंबल के ऊपर क्या बैटल है, व्हाई डिड द एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लद्दाख इट रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज द पार्टी सिंबल ऑफ द नेशनल कॉन्फ्रेंस। सो हेरेन वी सी कि Supreme Court came down hard on the LG administration because of its failure to abide by two orders of Jammu and Kashmir High Court and Ladakh, जो उन्होंने issue किए थे 9th of August को, and second was ordered on 14th of August. So basically जो judgment थी that allowed the National Conference to retain the PLO as its party symbol in Ladakh. So PLO, it is already a registered party symbol of the National Conference with the Election Commissioner of India, and the Apex Court hinted at a deliberate delay by the administration. So even जब हम बात करते हैं जो जुडिशरी के वर्डिक्ट्स रहते हैं एंड द टाइम टेकन टू इम्प्लीमेंट देम, तो वहां पे मिनिमम पॉसिबल टाइम गैप होना चाहिए। इसके अलावा अगर हम बात करें या पार्टी सिंबल्स की बात हो रही है तो उसके अराउंड जो फैक्चुअल चीजें हैं वो आप सर्च कर सकते हो। what does the RPA Act has to say on that, and election commission कैसे बेसिकली एक पार्टी को सिंबल एलोकेट करता है, एंड वो पार्टी का भी क्या नेचर है, क्या वो नेशनल पार्टी होनी चाहिए या फिर रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी होनी चाहिए, तो ये सब चीजें आपको पता होना इम्पोर्टेंट है।
So transfer of the personal data under the UN treaty, it will be under our domestic laws. So as the United Nations member states, they negotiate a treaty to counter the cyber crimes. So India ने suggestion दिया है international forum में कि जो again transfer of personal data रहेगा उसको हम convention के under cover करें, and that needs to be covered even under the domestic laws of the country, and no other applicable international law exist होना चाहिए. Again, that creates confusion. So जो इंडिया में लेटेस्ट डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट है, दैट इज बीन एनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट, उसमें एक प्रोविजन है जो ये बोल रहा है कि पर्सनल डेटा कैन बी प्रोसेस्ड इन द इंटरेस्ट ऑफ सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया और सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट फॉर फुलफिलिंग एनी ऑब्लिगेशन अंडर द लॉ. तो इन अ वे ये एक तरीके से रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन की बात की जा रही है. So it is the UN Cyber Crime Convention. There we are discussing the necessary changes in the existing systems. क्या किए जाने चाहिए अगर ये convention India sign और ratify करता है तो. So past 3 years से again discussions are going on around this convention, and of late definitely we are seeing कि cyber crime के जो numbers हैं they are exponentially rising. तो सिकल सेल अनीमिया फर्स्टली जो साइंटिफिक टॉपिक है, साइंस के पर्सपेक्टिव से जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है. इंडिया में क्या ऐसी कोई अनीमिया पॉलिसी है या नहीं, इसके अराउंड प्रीलिम्स में इस साल क्वेश्चन भी आया था. So here we see for the sickle cell patients an elusive disability certificate plan to issue the permanent disability certificates to those above the age of 5 with sickle cell disease has been stuck in a quagmire at the 3 union ministries for nearly 3 years. मतलब sickle cell अनीमिया से जो पेशेंट्स हैं अबव 5 years of age जो सफर कर रहे हैं उनको एक परमानेंट डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट इशू कर देना, उसके अराउंड यहाँ पे बात चल रही है. तो दिस इज बीन स्ट्रक, इसको पास नहीं किया गया है. एंड आई वुड से कि रादर देन issuing such types of permanent disability certificates to the patients, हमें काम करना चाहिए how we are going to reduce their numbers. So sickle cell anemia एक genetic blood disorder है, especially it is prevalent among the tribal population. तो इवन यहाँ पे nutritional security भी बहुत important role play करती है. इसके अलावा हमने बेमतारा मॉडल डिस्कस किया था, कैसे हम सिचुएशन को लोकल लेवल पे, रियल ग्राउंड लेवल पे टैकल और काउंटर कर सकते हैं, एंड एक्चुअली वी कैन गेट द रिजल्ट्स. सो प्रेसिडेंट ने आयुष्मान भव हेल्थ कैंपेन लॉन्च किया है. सो कैंपेन का एम जो है दैट इज टू डिलीवर हेल्थ केयर सर्विसेज to the last mile and consolidate access and affordability for the underserved populations. So healthcare sector की बात करें, one of the major challenges is हाई आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर. तो उसको हम कैसे और रिड्यूस करेंगे. जो ट्रेंड है वो डिक्लाइन हो रहा है, बट स्टिल जो अभी करंट लेवल पे है वो एक हायर लेवल पे ही है, तो उसको हमें और रिड्यूस करने की जरूरत है. उसके बाद यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की आप बात कर सकते हैं. लोकल लेवल पे आंगनवाड़ी कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं, उनके रोल को हम और कैसे स्ट्रेंथन कर सकते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट. आयुष्मान भारत के बारे में आप बात करेंगे. देन administering vaccines, that is also an important area. And child stunting, child wasting, इन चीजों को भी हम कैसे address कर सकते हैं, that's important. And apart from this, कितना spending है, कितना percentage of GDP are we actually spending on the healthcare sector, वहां पे भी हमें majorly एक improvement की जरूरत है. Then only we can see कि जो हमारे targets हैं different micro level पे जो targets हैं हम उनको achieve कर पाएंगे अगर adequate amount of funding funds available होंगे. Then again, Libya में आप flash floods देख रहे हो, as we were talking about the impact of climate change global level पे, you need to know about these examples. So यूरोपियन यूनियन कार्बन लॉ, इंडिया के जो ट्रेड के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा. एंड इसके अलावा आप बात कर सकते हो कि
कैसे ये लॉ फंक्शन करेगा, क्या इसके फीचर्स है, वो आपको पता होना इम्पोर्टेंट है। एंड कार्बन मार्केट्स इन इंडिया में आपको पता होना चाहिए कि डू वी हैव राइट नाउ, क्या हमारी इंडिया में कार्बन मार्केट फंक्शन कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो उसके लिए हमारे क्या प्लान्स आने वाले टाइम में। So CBM framework जो है it involves onerous reporting requirements with the import levies to be imposed on carbon intensive products from 2026. So this European Union जो carbon law it will be operational by 2026. सो डेफिसिट मानसून की वजह से वी आर सीइंग कि कॉफी प्रोडक्शन के ऊपर भी इम्पैक्ट हुआ है। तो अगेन कॉफी की जब हम बात करते हैं, क्या क्लाइमेटिक कंडीशंस इंपॉर्टेंट है फॉर द कल्टिवेशन ऑफ कॉफी। एंड इंडिया में अगेन यू नीड टू नो अबाउट द ट्रेंड कॉफी प्रोडक्शन में, एंड डू वी एक्सपोर्ट कॉफी, क्या कॉफी के लिए एमएसपी प्रोवाइड की जाती है। उसके अलावा आप बात कर सकते हो कुछ एंडेमिक कॉफी वेराइटीज की जो इंडिया में मिलती है ओनली। एंड इसके अलावा मेन चैलेंजेस क्या है फॉर दिस कॉफी कल्टिवेशन सेक्टर फॉर इंडिया, एंड कौन सी मेजर स्टेट्स है जहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कॉफी प्रोड्यूस की जाती है। एंड कॉफी प्रोड्यूस कैसे की जाती है, डू वी हैव सीड्स, या क्या किस तरीके से कॉफी कल्टिवेशन किया जाता है, डू वी हैव लाइक श्रब्स होते हैं या प्लांट्स होते हैं। तो यहाँ पे इतनी माइक्रो लेवल की क्लैरिटी होना इंपॉर्टेंट है। And Indian coffee, it has fetched good prices lately owing to the supply disruptions because of ब्राजील में सप्लाई डिस्ट्रप्शन देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर है ब्राजील, तो उसकी वजह से इंडिया में जो प्राइसेस है वो इंक्रीज हुए, तो वहां पे थोड़ा बहुत एडवांटेज आप बोल सकते हो। कमिंग टू द मिंट न्यूज़पेपर, सो फोन इंडस्ट्री की बात करें तो इज बेटर एट मेकिंग फोन्स, इंडिया और चाइना। तो देयर इज कंपटीशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना। किन एरियाज में कंपटीशन है, कौन से फैक्टर्स जहाँ पे इंडिया बेटर है या जहाँ पे चाइना बेटर है। सो इंडिया में आईफोन्स पहले क्यों नहीं बनाए गए, एक ये एरिया है। सो चाइना इट स्टार्टेड मेकिंग द अपकमिंग आईफोन्स बिफोर द लॉन्च, एंड इंडिया में जो प्लान्स थे दे वर सो फार मेकिंग न्यू फोन्स बिहाइंड स्केड्यूल। सो बाय दिस ईयर जो चेन्नई में प्लांट है, फॉक्सकॉन का चेन्नई प्लांट है, दे स्टार्टेड मेकिंग आईफोन 15 लास्ट मंथ itself. So this suggests कि इंडिया में we are now serving as a parallel manufacturing market alongside China, which has been a long term local manufacturing goal। हमारे काफी लंबे टाइम से कि गोल रहा है कि इंडिया में भी पैरेलली हम आईफोन्स को मैन्युफैक्चर करें, स्पेसिफिकली आईफोन्स की बात की जा रही है। सो वी हैव बेसिकली एटलीस्ट वी आर प्रोड्यूसिंग देम, बट अगेन वी नीड टू पुश फॉरवर्ड जब हम बात करते हैं कि जो पेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो हमें और इंक्रीज करने की जरूरत है। तो हैज इंडिया कॉट अप विद चाइना, नॉट एंटायरली। इंडस्ट्री इनसाइडर्स जो है उनका ये कहना है कि जो आईफोन 15 का बेस सेट वाज मेड लोकली, प्रो आईफोन जो थे स्टिल असेंबल्ड अवे फ्रॉम इंडिया। सो कुछ ऐसे मॉडल्स है जो इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, कुछ अगेन स्टिल हम इंपोर्ट कर रहे हैं। प्राइमरी रीजन इज कि जो सप्लाई चेन्स हैं। सो फॉर द डिवाइसेस लाइक जो प्रो आईफोन्स हैं, एप्पल ऑलरेडी एस्टैब्लिश कर चुका है पार्टनर वेंडर्स इन चाइना ऑपरेटिंग एट सर्टेन बैलेंस ऑफ कॉस्ट, स्केल एंड अवेलेबिलिटी। तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जहाँ पे चाइना में अगेन चीजें फेवरेबल है, बैलेंस ऑफ कॉस्ट, स्केल एंड दी अवेलेबिलिटी। सो इंडिया अभी ऑब्वियसली इट इज अ न्यू कमर, तो वी आर स्टिल गोइंग टू टेक टाइम जब हम बात करते हैं स्केलेबिलिटी की। सो इंडिया में क्या हम स्मार्टफोन्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं या सिर्फ हम असेंबल कर रहे हैं उनको। तो मैन्युफैक्चरर्स दे कंटिन्यू टू इंपोर्ट स्टिल जो की अगेन कंपोनेंट्स है उनको हमें स्टिल इंपोर्ट करना पड़ रहा है, लाइक कैमराज हो गया, डिस्प्ले यूनिट्स एंड चिप्स, एंड देन हम उनको इंडिया में असेंबल कर रहे हैं। तो इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं हो रही चीजें, इंडिया में असेंबल हो रहे हैं। तो इंडिया देयरफॉर हाई लेवल असेंबली डेस्टिनेशन की तरह इमर्ज हो सकता है। चाइना विद एस्टैब्लिश्ड फैब्स दे हैव द अपर हैंड है। तो जो अगेन जो चिप्स की हम बात करते हैं तो वो एक हम बोल सकते हैं एक स्ट्रैटेजिक रोल भी प्ले कर रही है, ये हमें समझ में आया कोविड 19 के बाद।
So again, we can address this gap which exists in India as well. So skilled workforce एक important factor है. बात करते हैं मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग की. सो ये आईफोन्स चीपर क्यों नहीं है? सो ओवरऑल अगर हम इनको इंडिया में असेंबल कर रहे हैं तो इनका अगेन प्राइस चीप क्यों नहीं हो रहा है? सो ओवरऑल इंडिया इज अ चीपर मैन्युफैक्चरिंग डेस्टिनेशन देन चाइना. तो यहाँ पे चाइना एडवांटेज एंजॉय करता है, बट एप्पल्स आईफोन सेल्स कंटिन्यू टू ग्रो डिस्पाइट दैट, एंड इट कुड जंप नियरली बाय अनदर 40% दिस ईयर. सो एक्सपर्ट्स का मानना है कि दिस मींस कि एप्पल डज नॉट रियली नीड टू लोवर द प्राइसेस. अगर अगेन कि प्राइसेस हायर लेवल पे स्टिल डिमांड इंक्रीज हो रही है तो एप्पल क्यों सोचेगा कि प्राइसेस रिड्यूस किए जाने चाहिए? सो एप्पल को अगेन higher profits हो रहे हैं तो why would it think about reducing the prices? Now coming to Financial Express newspaper, let's see the important topics of the day here. Demand for artificial intelligence jobs reduced by 6% in the past year. So it's all in the numbers we can see, but again आने वाले time में we can't again deny this area or this sector. यहाँ पे we expect jobs to increase in future. So space sector में आप बात करोगे वहां पे we have certain opportunities. Then AI specialists, that is another position, and right now we are seeing कि again आप बोल सकते हो कि यहाँ पे अभी के टाइम में एडवांटेज आप enjoy कर सकते हो as per your skills, if you're skilled enough to be an AI specialist or to work in space sector. So Ujjwala scheme, it gets an extension, and 7.5 million new LPG connections have been to be provided in the next 3 years. So clean fuel for all. So again उज्ज्वला स्कीम की वजह से जब हम इंडो पोल्यूशन की बात करते हैं तो उसमें हमें कितना वी कैन से कितनी प्रोग्रेस हुई है, कितना बेनिफिट हुआ है. सो दिस हैज रिजल्टेड इन इंक्रीज ऑफ एलपीजी पेनिट्रेशन इन द कंट्री फ्रॉम 62% टू नियर सैचुरेशन नाउ. So 2016 to 2023, again 7 years में we have achieved this saturation level. So clean cooking fuel and major जो again इंडो पोल्यूशन वुमेन हेल्थ के ऊपर इसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता था, तो मेन एम उसी को डील करना था. So core inflation also eases, but जो upside risk है that still remains. So core inflation, कल हमने retail inflation की भी बात करी थी, CPI inflation that also reduced by some level. So if you look at the wholesale index, so for the last 3 months, prices of several commodities they are on upside. Crude prices की आप बात करो वो increase हो रहे हैं. That is also another challenge. And when you talk about the price pressure, was visible in textile sector, leather, non-metallic minerals, steel, and some petroleum products. जो कोर सीपीआई इन्फ्लेशन की अगर आप बात करो तो इट एक्सक्लूड्स कंपोनेंट्स ऑफ फूड एंड फ्यूल. अगर हम नॉर्मल सीपीआई इंडेक्स की बात करते हैं तो उसमें फूड एंड फ्यूल के प्राइसेस इंक्लूडेड होते हैं, बट यहाँ पे वर्ड क्या यूज किया है? कोर सीपीआई इन्फ्लेशन. तो कोर इन्फ्लेशन में फूड प्राइसेस एंड फ्यूल प्राइसेस का पार्ट नहीं होते हैं. सो एक चैलेंज ये है कि कोर सीपीआई इन्फ्लेशन हैज बीन स्टिकी एंड वो ज्यादा रिड्यूस नहीं हो रही है. सो दिस इज अनदर चैलेंज इन इंडिया. So global investor summit is happening in Uttarakhand. So again Uttarakhand की आप बात करो the potential that exists, tourism industry की बात कर सकते हो. उसके अलावा again disaster management challenge exists there. Uttarakhand में specifically Joshimath में we saw land subsidence. So different kind of factors are there, different plans are required. And again कौन से ऐसे areas है जहाँ पे employment create की जा सकती है so that we can reduce or stop the distress migration from the hilly states. So we can come up with certain investor-friendly policies, top-notch infrastructure availability honi chahiye, serene ambience needs to be there. So again,
रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके अलावा टूरिज्म यू हैव टॉक्ड अबाउट, एंड वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की आप बात कर सकते हो, वहां पे अगेन एक्सपोर्ट्स बूस्ट किए जा सकते हैं। एंड फार्मा सेक्टर कैन बी अनदर एरिया, एजुकेशन सेक्टर कैन बी अनदर एरिया। सो सिक्योरिटी स्पॉटलाइट ऑन एरिया साउथ ऑफ पीर पंजाल, तो ये एक इम्पोर्टेंट अगेन माउंटेन रेंज की जब आप बात करोगे स्पेसिफिकली जम्मू एंड कश्मीर में, तो आपको क्लैरिटी होना चाहिए एंड जो इम्पोर्टेंट लोकेशंस है वो कौन से माउंटेन रेंज के पास लोकेटेड है या कौन से माउंटेन रेंज पे लोकेटेड है। ये इस तरीके के क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आते हैं, तो ये क्लैरिटी होना इम्पोर्टेंट है। So export demand low है, farmers they call for lifting of the curbs on basmati। तो already export demand कम हो रही है and then export curbs भी लगा दिए गए हैं, तो उसकी वजह से चीजें थोड़ी और खराब हो गई, जिसकी वजह से again farmers को सफर करना पड़ रहा है। तो government move likely to depress the paddy prices in the new marketing season। एंड जो गवर्नमेंट ने स्टेप्स लिए दैट वाज टू इंश्योर कि जो हमारी डोमेस्टिक फूड इन्फ्लेशन है हम उसको कंट्रोल कर सके। सो बेसिकली दो ये बोल सकते हो, दो डेलेमास हैं, farmers interest versus the domestic inflation। So Nipah virus, you can just go through this article, can why it is so deadly, ये सब चीजें यहाँ mentioned हैं, what makes it dangerous, and it is a zoonotic disease, so animal to human transmission happens and human to human transmission also happens। India's supply chain opportunity, तो यहाँ पे चाइना +1 स्ट्रैटेजी की आप बात करोगे, एज द फोकस ऑन इट इंक्रीजेस, इंडिया में हिस्टोरिक अपॉर्चुनिटी है टू प्रमोट इंडस्ट्रियलाइजेशन इन ऑल ऑफ द साउथ एशिया। तो इंडिया कैन बिकम वन इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द सप्लाई चेन, ग्लोबल सप्लाई चेन। एंड इवन जब हम इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की बात करते हैं तो वहां पे भी मेजर जो पोटेंशियल ऑफ ग्रोथ है वो एग्जिस्ट करता है, तो वी नीड टू एक्सप्लॉइट दैट टू आवर ओन एडवांटेज एंड इवन उसके ग्लोबल रेपरकशंस या मल्टीप्लायर इफेक्ट्स भी देखने को मिलेंगे। सो इंडिया वाज द वर्ल्ड 6th लार्जेस्ट इंटरमीडिएट गुड्स इंपोर्टर इन 4th quarter of 2022। You can see here the ranking। So why is India being considered as an attractive supply chain hub? So Southeast Asia में we can see it is backed by foreign companies, जहाँ पे again जो important factors attract करते हैं foreign investors को, that is cheap wages, fiscal incentives and improved logistics। So India की जो logistics policy भी है again that is also targeting in reducing the logistics cost, because वो India में again एक major challenge है जो exist करता है compared to the logistics cost that is there in other markets। So वियतनाम, थाईलैंड से again हमें कंपटीशन देखने को मिल रहा है, सप्लाई चेन इज शिफ्टिंग इन देयर फेवर, बट ओवर टाइम इंडिया कैन आल्सो बिकम अ कॉम्प्लीमेंट्री एशियन मैन्युफैक्चरिंग हब टू चाइना बाय रीपिंग द गेन्स फ्रॉम फॉरेन टेक्नोलॉजी ट्रांसफर्स जो इंडिया में हो रहे हैं एंड क्रिएटिंग वैल्यू एडेड जॉब्स। एंड अगेन जो इंडिया की लार्ज डोमेस्टिक मार्केट एग्जिस्ट करती है एंड स्ट्रॉन्ग स्टेबल रोबस्ट इकोनॉमी दैट इज देयर, एंड जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, डिफरेंट पॉलिसीज के बारे में आप सोच सकते हो जो अगेन इन्वेस्टर्स को, मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस को फेवर करेंगी। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एक जो स्कीम सक्सेसफुली वर्क कर रही है दैट इज देयर। सो इंडिया को प्रमोट करना चाहिए एक्सपोर्ट ओरिएंटेड एफडीआई,
सेकेंड, जो लोकल कंपनीज है, वी नीड स्मार्ट बिजनेस स्ट्रेटजी सो दैट वो भी ग्लोबल सप्लाई चेन्स में कंट्रीब्यूट कर सके एंड वो भी एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सके. एंड caution should be exercised before India attempts to replicate China's state interventionist template wholesale, as there is a significant risk of government failure and cronyism involved in this. सो चाइना की अपनी इंडिया की अपनी एक यूनिक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए. वी डोंट हैव टू डायरेक्टली कॉपी व्हाट चाइना डिड, बिकॉज वो चाइना के लिए बेनिफिशियल, राइट? इज नॉट इम्पोर्टेंट कि वो इंडिया को भी उतना ही बेनिफिट करेगा. सो लिबिया में फ्लैश फ्लड्स and Morocco में you're seeing earthquake. Hong Kong में भी we were seeing flash floods of late. So that's there. So that's all for the day. Thank you so much for joining us, and do subscribe to the channel and keep watching.